Om Shri Paramatmane Namaha. Learning Sanskrit and Gita together. Gita Abhyase 8-5 Antakale cha mamevo. Antakale cha mamevo smaran muktva kalevaram. Padachchedahi. Antakale cha mam eva smaran muktva kalevaram. Yah prayati samadbhavam yati nastyatra samshayah. पदच्छेदे यः प्रयाति सः मद्भावं याति न अस्ति अत्र संशयः. वाक्यांशः विश्लेषण. I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः, कर्तृपदीयाः, कर्मपदीयाः, अन्ये सुबन्ताः, विधेयाः, अव्ययानि, कृदन्ताः, तिङन्ताः. अन्तकाले च माम् एव स्मरन् कलेवरं मुक्त्वा यः प्रयाति सः मद्भावं याति. संशयः अत्र न अस्ति. Note: वाक्यांशाः 1a to 1e together make one complex sentence, where the krudanta smaran in 1b and muktva in 1c have their own karmapadiya. The phrase Vakyanshaha Antakale cha in 1a is common to all three Vakyanshaha from 1b to 1d and is hence identified separately as 1a. Antakale cha Antakale Antakala पुल्लिंगम सप्तमी एकवचनम. अंतस्य कालः इति अंतकालः षष्ठी तत्पुरुष. अंतस्य अंत एंड पुल्लिंगम षष्ठी एकवचनम. कालः काल टाइम पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. अंतकालः टाइम ऑफ एंड ऑफ लाइफ. अंतकाले च एंड एट द टाइम ऑफ डेथ. माम एव स्मरन्. माम अस्मत् सर्वनाम द्वितीया एकवचनम. एव ओनली अव्ययम. स्मरन् स्मृ धातोः शत्रु विशेषणं स्मरत्. अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. स्मृ आध्याने टू रिमेंबर, टू रिकलेक्ट, टू थिंक अपॉन, टू रिसाइट मेंटली, टू मेमोराइज. भ्वादि प्रथमगणीयः परस्मैपदी. सकर्मकः अनिट्. स्मृ चिंतायाम also to remember, to recollect, to memorize. भ्वादि प्रथमगणीयः परस्मैपदी. सकर्मकः अनिट्. स्मृ प्रीतिबलनयोः to satisfy, to please, to force. स्वादिः पंचमगणीयः परस्मैपदी. सकर्मकः अनिट्. माम एव स्मरन्, remembering me only, meditating on me only. कलेवरं मुक्त्वा. कलेवरं कलेवर बॉडी पुल्लिंगम नपुंसकलिंगम वा द्वितीया एकवचनम. मुक्त्वा मुच् धातोः क्त्वान्तं. मुच् मुच्ऋन् मोक्षणे. टू फ्री, टू लिबरेट, टू लीव, टू रिलीज, टू लूजन, टू अबैंडन. तुदादिः षष्ठगणीयः उभयपदी. सकर्मकः अनिट्. कलेवरं मुक्त्वा leaving the body or leaving the body. यः प्रयाति. यः यत् सर्वनाम अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. प्रयाति प्र प्लस या धातोः लट् लकारः प्रथम पुरुषः एकवचनम. यः प्रयाति. The soul which proceeds ahead. प्रया to proceed ahead. सः मद्भावं याति. सः तत् सर्वनाम अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. मद्भावम मद्भाव पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम. मम भावः इति मद्भावः षष्ठी तत्पुरुषः. मम अस्मत् सर्वनाम षष्ठी एकवचनम. भावः भाव पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. In Aptech dictionary there are 37 shades of meanings detailed. Since its etymology is given as bhu bhave ghain,
One can paraphrase the etymology as bhuyate anena iti bhava. So bhavaha is that which connotes the beingness or essence of an entity or of a concept. याति या धातोः लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं या प्रापणे टू गो टू पास टू रीच अदादिः द्वितीयगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् सः मद्भावं याति he attains beingness akin to that of me अत्र संशयः न अस्ति अत्र here अव्ययम् संशयः संशय डाउट पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम न नो नॉट अव्ययम् अस्ति अस् धातोः लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस् असं भुवि टू बी टू एक्सिस्ट अदादि द्वितीयगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः सेट अत्र संशयः न अस्ति देयर इज नो डाउट अबाउट दिस ओवरऑल मीनिंग अंतकाले च यः माम् एव स्मरन् कलेवरं मुक्त्वा प्रयाति सः मद्भावं याति अत्र संशयः न अस्ति and the soul which at the time of death leaving the body remembering me only meditating on me only proceeds ahead he attains beingness akin to that of me there is no doubt about this अंतकाले च छंदो विश्लेषण अंतकाले च मामेव अष्टरक्षाणि च मामे एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् अष्टाक्षराणि कलेव एतेषां मात्राः एका द्वे एका यः प्रयाति समद्भावम् अष्टाक्षराणि समद्भा एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे याति नास्त्यत्र संशयः अष्टाक्षराणि त्रसंश एतेषां मात्राः एका द्वे एका अस्मिन् अष्टमे अध्याये पंचमे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः स्वाध्यायः नोट्स ऑफ सेल्फ स्टडी द एडवर्बियल फ्रेज अंतकाले च is common to all four action words स्मरन् मुक्त्वा प्रयाति याति even the phrase मामेव स्मरन् is common to the other three action words muktva prayati yati. As per grammatical characteristics, the phrase kalevaram muktva is prior to prayati and yati. Tva connotes the previous action. So, kalevaram muktva is prior to prayati and yati. The action words prayati and yati are also in that sequence only. Prayati proceeds ahead. Yati reaches, attains. Since Kalevaram Muktva, leaving the body, is action prior to Prayati, proceeds ahead, what proceeds ahead after leaving the body can be only the soul. Is it not thought-provoking that implicit here is migration of the soul after death? Different souls would migrate differently. The one who is Mameva Smaran, meditates on me, attains Madbhavaha, attains beingness akin to that of me. Note that in Kalevaram Muktva, there is Mukti, living, but that is the soul leaving the body, not the emancipation of the soul from the cycles of births and deaths, which is really the Mukti. That is connoted by Saha Madbhavam Yati. He attains beingness akin to that of me. In Indian philosophy, they speak of Mukti being of four types: Salokata, Samipata, Sayujyata, Sarupata. For my own simplistic understanding, I take Mukti being of four types is like going to meet somebody at his address. Say 201 Shuchi Heights. If I reach Shuchi Heights, it is Salokata, being in the same premises. If I reach apartment number 201, it is Samipata. I am so close, right there. The person opens the door and shakes hands with me, which is Sayujyata.
Yuj, to join. We hug each other. The third person cannot make out who is the host, who is the guest. That is Sarupata. Saha Madbhavam Yati. He attains beingness akin to that of me. Appears to be Sarupata, but maybe Sayujyata, certainly a good enough intimacy, even if it may not be totally identical identity. Is it not fantastic? With what subtlety is suggested in the shloka, migration of the soul after death, leading even to Sayujyata, if not Sarupata. The way to attain that is Antakalecha Mameva Smaran, meditating on Him only, especially at the time of the last breath. How can one be sure that one can be meditating on Him at the time of the last breath? That can happen only if one meditates on Him non-stop, at every breath. May death come at any breath. The word cha in Antakalecha has that inclusive sense, meaning Mameva Smaran, meditating on Him only, not just Antakale, rather Sadaiva. Shubhamast.